Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the afternoon trading session, and we will have Arpit sir with us today for this session. And जैसे कि हमने बात किया था सुबह निफ्टी जब हमने सुबह बात डिस्कस किया था it was flattish to positive and अगर हम अभी भी देख रहे हैं it was still flattish to positive एक पूरे रेंज में मूव हो रहा है. So I will just hand it over the session to Arpit sir because he will be the right person to give a very detailed insight about the market, right? So Arpit sir, let me know if we are good to go. Yeah, Avinash, just a minute. I'm just setting up the frame. I'll just take 30 seconds. Then we can start. Sure, Arpit sir. I just want to check, Avinash, the screen is visible? Yes, Arpit sir, your screen is visible. Your camera is also on. You're good. Perfect. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty Weekly Outlook. So if we see starting से अगर हम देखें, so the flow for the session would be starting with Bank Nifty and Nifty Outlook, followed by broader market. How is the broader market set up? Then the few positional ideas that are looking good, followed by BTST or STBT idea as per the market setup wise. And if any option buying or option strategy setup trade, if we can find it for tomorrow's expiry. So we'll go in that flow. So first and foremost, starting with Nifty. If you see overall Nifty, yesterday we've seen a very sharp up move from 23,300 to almost 23,750, 23,800 levels. So कल एक अच्छा मूव हमने देखा निफ्टी में 400 से 450 पॉइंट का. And today, generally market का nature रहता है after a sharp up move, market tends to consolidate. And today the market is taking a breather. So generally market एक बड़ा upstick देखा हमने yesterday session में, and now it is consolidating between 23,700 to 23,800 levels. Good part is that it is consolidated at the upper band. So एक observation अगर देखें तो पिछले almost 1.5 से 2 महीने में whenever we have seen a good rally of 350 to 400 points in Nifty, the next day momentum was missing, and after that again there was a selling pressure. But today if we see the setup wise, Nifty is relatively holding well after a sharp upmove of yesterday's session. And looking at the weekly setup structure, so I'll just plot on the weekly chart setup. 23,800 एक major immediate hurdle है. 23,800 की क्लोजिंग के ऊपर ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दे देगा जो काफी टाइम से सप्लाई जोन बन रहा है. एंड देन पोजिशनली वी कैन सी मूवमेंट टुवर्ड्स 24,000 24,200 लेवल्स इन निफ्टी. And if you talk about the daily levels, Nifty immediate support is around at 23,600 650 levels. Upside 23,800 is the immediate resistance, and then there is next level is 24,000. So overall bias is positive जब तक Nifty 23,650 के ऊपर क्लोजिंग रहती है. इसी के साथ अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, so बैंक निफ्टी हैज बीन क्वाइट आउट परफॉर्मर. एंड इफ यू सी द सेटअप वाइज, लास्ट वीक हमने वीकली स्केल पे वेरी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखा था. सो लेट मी गो टू दैट चार्ट. And while focusing on such concepts and theories, because that is very much helpful for understanding and analysis also. So एक bullish engulfing pattern हमने देखा था last week, और इस week हमने Monday के dip के बाद एक काफी अच्छा follow up देखा rally of 1,000 points yesterday, mainly led by ICICI same quarter. So 50,000 एक काफी टाइम से सप्लाई जोन हुआ करते थे बैंक निफ्टी के लिए. So yesterday it gave a breakout about 50,000 after almost 19 sessions. And the good part is that आज अपने पूरे गेन्स को होल्ड कर रहा है. और आज भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 250 से 300 पॉइंट ऊपर है, हालांकि कंसोलिडेटिव है, बट स्टिल द गुड पार्ट इज दैट इट इज होल्डिंग एट हायर लेवल्स. तो इमीडिएट बेसिस पे जब तक बैंक निफ्टी 50,000 150 50,200 के ऊपर है, बाइस विल बी पॉजिटिव फॉर 51,000 प्लस लेवल्स. इसी के साथ देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर. फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी है जिसके एंटिसिपेशन में बैंक निफ्टी में अच्छा मूव हमें मिल रहा है. Tomorrow we have SBI result, so that would be the almost the last result within the banking space, which is the heavyweight stock. So definitely SBI and banking stocks will move ahead of RBI policy, and we have seen that move also. Along with that, if we see HDFC Bank has been quite good. चाहे वो HDFC Bank हो, कोटक हो, ICICI हो, so all three are looking very promising. Apart from that, if we see Kotak Mahindra Bank, so अगर हम banking space में अगर देखें, so after a big gap up on 20th January post result, stock has been consolidated at this upper band near 1875 to 1920 levels. And I think this सबसे banking का structure है. So definitely we can see good up move towards 1950 2000 plus levels.
ये हमारा 4 वीकली प्रोडक्ट में भी दिस कॉल इज ओपन. सो कोटक महिंद्रा इज फर्स्ट सीडीआई कॉल विद इन द बैंकिंग स्पेस. 1910 से 1920 की रेंज में बाय करें. 1860 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर 2000 के टारगेट के लिए कोटक का बाय कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट सीडीआई कॉल. As we are going through, if you see apart from that, good momentum is seen in gold finance companies, exchange stocks also. But coming back to Bank Nifty, आज अगर हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे मूव देखें, सो काफी टाइम से मैं 51,500, 51,800 का कॉल भी ट्रैक कर रहा हूँ. पर अगर इंट्राडे चार्ट देखें, बैंक निफ्टी बहुत ही नैरो रेंज में है, जिसकी वजह से there is no major momentum. Yesterday was very good momentum and we played it also quite well. So setup wise positive है, but immediate एक थोड़े से हर्डल जोन के पास में, so बाइस पॉजिटिव है. तो बेटर है कि अगर ऑप्शन में कोई सेटअप बनता है तभी हम अपडेट करेंगे. 50,200 is the immediate support zone for Bank Nifty. अपर बैंड में 50,750, 51,000 टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी. So ये हुई निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात. Apart from that, Kotak Mahindra, that is one of our serial call that is already open and we have shared also. One more serial call that is looking good from the chemical and fertilizer space is Navin Fluorine. तो अगर नवीन फ्लोरिंग का हम चार्ट सेटअप देखें तो एसआरएफ, नवीन फ्लोरिंग, ये सब स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम था पिछले कुछ दिनों में. एंड नवीन फ्लोरिंग का भी हम चार्ट सेटअप देखें, एक बड़े अपमूव के बाद, रिजल्ट के बाद गैप अप हमने देखा. एंड पोस्ट दैट इट्स कंसोलिडेटिंग एट हाई लेवल्स, ऊपर के लेवल में बैंड पे कंसोलिडेट कर रहा है. इमीडिएट 4000 का मेजर सपोर्ट है. एंड आई थिंक 4250 की क्लोजिंग के ऊपर डेफिनेटली हमें 4 से 5% का अपमूव दिख सकता है. तो सेकंड कॉल इज फॉर द सीडीआई इज नवीन फ्लोरिंग. आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं. 4000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 4400 और 4550 के टारगेट के लिए नवीन फ्लोरिंग के सेकंड सीडीआई कॉल. So we talk about Nifty, Bank Nifty, few stock ideas that are looking good. CDI calls जो हमने कोटक एंड नवीन फ्लोरिंग के बारे में बात किया. Apart from that, अगर ओवरऑल मार्केट सेटअप वाइज देखा जाए, as we have seen some green shoots in the market and definitely we have seen some smiles on our faces because last 7 to 8 days में Nifty has recovered well from lower levels from 22,800 जो panic bottom बना था, वहां से हमने almost 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी है. So going forward, it will be a more sector specific and stock specific approach. Broader market में अगर mid cap chart अगर setup wise देखें, so थोड़ी रिकवरी हमने देखी है, बट कंपैरेटिवली हेवीवेट से ज्यादा मोमेंटम था जिसकी वजह से अच्छी रिकवरी हुई. बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा एंड वही हमें मार्केट का फ्लेवर देखना है. एज वी आर डिस्कसिंग, एक हमारा बीटीएस की फ्लैश भी हुआ है. एज वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस. सो बैंकिंग स्पेस में ही सिटी यूनियन बैंक अभी चल रहा है 179. तो सेटअप वाइज ट्रिपल बॉटम बना है, डेली स्केल पे हाईएस्ट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, रेंज ब्रेकआउट दिया 177 के ऊपर. सो सिटी बैंक इज द फर्स्ट बीटीएसटी आइडिया. आप करंट लेवल पे बाय करें 175 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 185 एंड देन 188 के टारगेट ले. सिटी यूनियन बैंक इज द फर्स्ट बीटीएसटी आइडिया. आई होप अविनाश इट्स क्लियर. Arpit sir, could you please repeat again the stop loss? I guess Prashant has already posted. So yes, guys, we have initiated a intraday on City Union Bank. We have to buy it with current market price. It's trading near 179, I guess. So with a stop loss of 175, we have the target for the upside will be 185 and then 188. Yes. Coming back to Nifty, Bank Nifty also, we had a couple of sessions last month we did on the option strategy, and whenever as we have Bank Nifty monthly options, so definitely one advantage we have that we can set a positional view for Bank Nifty, and this view can be played through option strategies also. So if we see post budget, budget के बाद हमने काफी volatility में cool off दिखा. I'll just open up the chart of India VIX also. पिछले 4 से 5 दिनों में बजट के टाइम से वहां से हमने 18 साढ़े 18 के लेवल से पुल ऑफ देखा 13.5 का. सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रीमियम्स में हमें काफी श्रिंक देखा है. एंड ऑप्शन बाइंग में हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि इंडिया विक्स कैसे बिहेव कर रहा है. सो अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के थ्रू भी आपको बैंक निफ्टी प्ले करना है मंथली के ऑप्शन, सो डेफिनेटली वी कैन सजेस्ट बुल कॉल स्प्रेड्स, जिसमें हमारा व्यू रहेगा कि तेजी है बैंक निफ्टी में और 51,000 तक का मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले कुछ दिनों में. तो आप 50,500 का कॉल बाय करें और 51,000 का कॉल सेल करें. दैट वुड बी फॉर फरवरी सीरीज 27. कॉस्टिंग रहेगी अराउंड 200 to 220 पॉइंट्स, रिवॉर्ड रहेगा 250 पॉइंट्स. सो द बेस्ट वे टू प्ले सच मूव इज टू ऑप्शन स्ट्रेटजीज आल्सो बिकॉज यू गेट द बेनिफिट ऑफ प्रीमियम श्रिंकिंग आल्सो एंड ओवरनाइट का आपका रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है. So we have discussed about couple of ideas. Avinash, now what we can do, we can take few stock queries. And अगर कोई ऑप्शन सेटअप बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी में as per the setup wise, we would love to update on that.
Great. What is your view on PI India PI Industries. Industries? PI Industries. So PI industry also within the space of chemical and fertilizers. If you see setup wise, I'll just look at the bigger time frame chart. Let me have a look at the weekly chart. So weekly chart में अगर देखें तो जहाँ से ये मई 2024 में रैली शुरू हुई थी अराउंड 3400 34 वहाँ पे ही हैमर डोजी बना और लोअर ओरिजिनली फ्रॉम ईयर ऑन the major support is around 3450. Closing above 3600 confirmation दे देगा. Slowly steadily we can see a bounce towards 3800 levels. So अगर आप risk reward वाइज देखें तो major support उनके पास में है. Risk reward is favorable. So आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं. But I'm not seeing from a trading perspective, but from a medium term perspective 3450 का stop price रख के ऊपर 3800 और फिर 4000 के लिए PI Industries you can buy. Bajaj Finance. Bajaj Finance, one of the leading counter from the indices and leading from the front, and we have been quite bullish on this counter after a long time. And as chart speaks itself, we see 3.5 years का consolidation breakout दिया है monthly और weekly scale पे 8100 8200 के ऊपर strong bullish candle बनाया पिछले 2 हफ्तों से. एक अच्छा अप्रूव हमने देखा 7200 से लेके 8500 तक. So positionally, we are definitely expecting a good another round of 8 to 10% rally in coming series, 1 to 2 months perspective. So positionally 8200 का stop loss है. Immediate basis पे 8350 का है. धीरे धीरे हमें 8650, 8800, 9000 तक के मूवमेंट दिख सकते हैं. So Bajaj Finance is our most preferred pick within the NBFC space. 8200 एक मेजर सपोर्ट है. जब तक इसके ऊपर है तब तक बायस वुड बी पॉजिटिव. Indian hotels. Indian hotels. After, as we have seen some announcement in the budget for the consumption-driven thing, there was a changes in tax slab and everything. Some consumption-based stocks एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था. तो इंडियन होटल पे अगर हम देखें, वीकली स्केल पे लोअर इसको नेगेट किया है, हैमर बनाया है प्रीवियस वीक की, तो इंडिकेट करें नीचे के लेवल पे बाइंग है. सेटअप वाइज बायस पॉजिटिव है. स्लोली स्टेडीली वी कैन सी एन अपटिक. सो इमीडिएट बेसिस पे 795 का सपोर्ट है इंडियन होटल का. धीरे धीरे हमें ऊपर 830 830 850 तक का मूव दिख सकता है. बट अगर हम डेली स्केल पे देखें वापस 820 25 एक इमीडिएट हर्डल जोन है. सो आई थिंक 820 25 क्लोजिंग के ऊपर ही बेटर मोमेंटम रहेगा. किसी ने अगर नीचे पोजीशन ली होगी सो बेटर टू बुक एट करंट लेवल्स, देन रीविजिट अबाउट 825 लेवल्स फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 845 850 levels. So there is a question from Aarti ji. Tata Motors bought at 768 levels, and what could be your view for almost 5 years? Okay. Tata Motors bought at 768 for 5 years. Okay, so if we see setup wise, as the time horizon is quite big, and let's look at the monthly chart for that. So if we see the setup wise, definitely Tata Motors from last 4 to 5 months has been in corrective phase. Lower and lower का structure intact है. जहाँ से रैली शुरू हुई थी 670 690 अराउंड 700 के अराउंड से टाटा मोटर की रैली शुरू हुई थी अक्टूबर 2023 में. वहीं जाके उसने थोड़ा सा पॉज लिया है. अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है और आपने जो बाइंग प्राइस की है, सो डेफिनेटली बाइंग प्राइस काफी फेवरेबल है क्योंकि आपने स्टॉक में एक अच्छा करेक्टिव मूव के बाद बाई किया है. बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक पॉजिटिव है फॉर द 3 to 5 years perspective. मेजर सपोर्ट आता है टाटा मोटर का अराउंड 660 650 लेवल्स के अराउंड. जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हमें स्लोली स्टेडीली मूव दिख सकता है अगेन टुवर्ड्स 800 and 1000 प्लस लेवल्स. सो इन्वेस्टमेंट वाइज गुड लेवल एंट्री पॉइंट है. आप 650 का पोजीशन स्टॉप लॉस रखिए फॉर टाटा मोटर्स. Cochin Shipyard. Cochin Shipyard. If you see the setup wise of all the railway PSUs and the defense post budget has been lackluster. सेटअप वाइज अगर देखें तो एक जो बड़ा टॉप बना था लास्ट जुलाई 24 में पोस्ट दैट एक स्टॉक करेक्टिव फेज में ही है. हालांकि अगर डेली और वीकली स्केल पे देखें तो कंसोलिडेट कर रहा है बिटवीन 1380 to 1500 लेवल्स. देयर इज नो मेजर मोमेंटम. एनी क्लोजिंग अबव 1500 लेवल्स एक फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होगा टुवर्ड्स 1550 1560 तक का. तब तक एक रेंज बाउंड काउंटर है. बेटर टू एग्जिट द स्टॉक ऑन बाउंस नियर 1500 लेवल्स और बेटर आप शिफ्ट करें थोड़े से लार्ज कैप और जिसमें सेक्टर्स में जिसमें मोमेंटम है उसमें बेटर रहेगा शिफ्ट करने के लिए आपका फ्लो.
Arpit sir, could you please repeat once again the Bank Nifty strategy that you had shared earlier? So if you see the strategy, as we're discussing, we had a couple of knowledge sessions about strategy, and I think definitely people have been a little bit aware how to play the strategy. As we have Bank Nifty monthly outlook, and we can set up a view from a position perspective. तो किसी सेटअप वाइज वीकली स्केल पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, डेली स्केल पे भी रेंज ब्रेकआउट दिया, डबल बॉटम का कंफर्मेशन हुआ है। तो हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में स्लोली स्टडीली हमें मूव दिख सकता है टुवर्ड्स 51,000 51,250 तक का। तो ये जो मूव है हम प्ले कर सकते हैं थ्रू बुल कॉल स्प्रेड। इसमें आपको करना होगा, जो आपका मूव है वो आपको प्ले करना होगा थ्रू बाइंग ऑप्शन कॉल्स। सो इसमें आप 50,500 का कॉल बाय कर सकते हैं और 51,000 का कॉल सेल कर सकते हैं फरवरी मंथली सीरीज, जिसमें आपका प्रीमियम आउटफ्लो देना होगा 200 टू 220 पॉइंट्स और रिवॉर्ड रहेगा 250 टू 260 पॉइंट्स। इसका बेनिफिट ये रहेगा, आपको रोज टाइम नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसे हमने कल एक बड़ा मूव देखा बैंक निफ्टी में, उसके पहले गैप डाउन देखा, तो कभी भी एक जो बड़ा मूव रहेगा तब तक हम आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी और आपका स्टॉप लॉस रहेगा बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे 50,000। अगर 50,000 के क्लोजिंग के नीचे आएगा तभी वो एग्जिट करने की सलाह रहेगी, तब तक उसके ऊपर आप ये स्ट्रेटेजी के थ्रू प्ले कर सकते हैं। बिकॉज परसों हमारी आरबीआई की पॉलिसी भी है एंड हमें मूवमेंट भी रहेगा। सो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी आप प्ले कर सकते हैं विद कीपिंग बिगर पिक्चर इन माइंड। Kajaria. Kajaria Ceramics, टोटली इन डाउन ट्रेंड, वीकली डेली मंथली स्केल पे कोई भी मेजर पुल बैक भी नहीं आया और स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। आई थिंक बेटर टू एग्जिट ऑन बाउंस। आई जस्ट लुक एट द वीकली चार्ट वंस अगेन कि कौन से लेवल पे मेजर है। सो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, कोई भी मेजर लेवल पे रिवर्सल नहीं है। जब तक 1030 1050 जब तक नहीं निकलता तब तक देयर इज नो चेंज इन द ट्रेंड। बेटर टू एग्जिट द स्टॉक अगर लॉसेस में आप है, और या तो सेकंड आप थोड़ा सा अगर बाउंस बैक आता है तो बेटर टू एग्जिट द स्टॉक इन बाउंस बैक बिकॉज़ बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज इन पेन। So Arpit sir, what is your view on TCS for BTST? अगर हेवी वेट्स के बारे में बात करें, सो आईटी अगर देखें तो ओवरऑल एक रेंज में है, मिड कैप आईटी तो भी बेटर है। सेटअप वाइज ऑन द डेली स्केल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज ऊपर से थोड़ा सा हमने कूल ऑफ देखा है, बेरिश कैंडल बना है। So as per the BTSC setup wise, it's nothing looking very great perspective. So better to avoid because अगर हम intraday chart भी देखें, so let me have a look at the intraday charts. So बहुत ही एक narrow range में है, 4,060 से लेके ऊपर 4,090 4100 के रेंज में। There is nothing much great about this setup, so better to avoid. Having said that, if we see the exchanges space, exchanges stocks में एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। आज बीएससी का रिजल्ट भी है, वो आने वाला है कुछ ही देर में। बट अगर आप उसी के साथ M6 का चार्ट देखें, सो M6 एक रिलेटिवली बेटर है। डेली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया है, वीकली स्केल पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। सो M6 रिलेटिवली लुकिंग बेटर, सेटअप वाइज काफी बेटर है। अगर आप देखो तो आज भी बड़े मूव के बाद वो अपने अपर बैंड को होल्ड कर रहा है। सो आई थिंक M6 would be better in terms of BTST, better to avoid TCS as a BTST. Bank of Baroda. BOB. Let me have a look at the chart of BOB. If you see the setup of BOB, PSU stocks थोड़े से अंडर परफॉर्म किए, स्पेशली PSU बैंक्स थोड़ा सा बाउंस बैक हमने देखा है। बट इफ यू सी द सेटअप ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम, स्टिल इट इज एट मेजर डाउन ट्रेंड। 223 क्लोजिंग के ऊपर ही कोई सेटअप में चेंज रहेगा, तब तक एक अभी भी स्टॉक एक प्रेशर नहीं है, साइडवेज टू डाउन टेक की है। सो बेटर कि वेट करें। इसमें अगर आपको प्ले करना है पीएसयू बास्केट, पीएसयू स्पेस में, सो द मोस्ट प्रेफर्ड वुड बी स्पेशली एसबीआई। रिलेटिवली एसबीआई बेटर है डेली और वीकली स्केल पे। सो आपको एसबीआई में 2 से 3% का मूव देख सकता है एज कंपेयर टू बीओबी। सो एसबीआई इज बेटर एज कंपेयर टू बीओबी। Okay. I'm carrying Feb futures of UBL. The NHRG is holding UBL futures for the Feb series. So what is your view on it? But what is the buying price? The NHRG, please, mention the details so we can take your query. Yeah, because that is very important. Whenever we do anything in leverage or in F&O segment, it's very important what is the time frame and what price and how are we playing out. So that would be important.
सेटअप्स के हिसाब से अगर देखें तो एक बजट के बाद एक बड़ा अपटिक के बाद वापस पिछले 3 दिन में पूरा स्टॉक ने कूल ऑफ कर दिया 2300 लेवल से। वीकली पे जितना स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव था उतना ही आपके डाउनसाइड हो गया है। तो लेवल्स वाइज अगर बात करें तो 2020 का इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अपर बैंड में 2100-2120 का हर्डल है। सो अगर आपका फ्यूचर्स लॉन्ग है तो आप 2020 का स्टॉप लॉस लेवल ध्यान रखिए, जैसे भी आपका जो सीएमपी रहता है। बिकॉज ऑल्सो गाइस वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई, रिजल्ट जिसके है जिसके पेंडिंग है, whenever you build any position please keep a check on the result date, because a positive or negative trigger can definitely can take the stock wild swings on the either side. So जब भी result season रहता है better to keep your positions hedged, that would be very much better overnight. So adding to that only, the buying price was 2250 on UBL Feb series. Yeah, so if we see 2250, the stock is already down 10% from that buying price. Immediate basis वो 2022 is the major support levels, उसके नीचे closing आती है तो better to exit it. Immediate basis hurdle जो है 2100 का, 2100 की closing के ऊपर ही कोई change होएगा stock का setup. Great. Yeah, coming back to just to give an update on Nifty Bank, let us revisit the Bank Nifty chart. What is it happening? So HDFC is pulling up the Bank Nifty, however ICICI and Kotak are sideways. But if you see the setup wise, 50,350, 50,400 के वहाँ पे consolidated कर Bank Nifty. And as per the setup wise, generally ahead of ROA policy, we see action. So we have already seen action yesterday. So tomorrow being Nifty expiry, we can see another some uptick or some momentum in banking stocks. So एक BTST आइडिया हमने सिटी यूनियन बैंक दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई BTST आइडिया और अच्छा लगता है तो हम डेफिनेटली कैन अपडेट कर सकते हैं। कोटक बैंक एंड नवीन फ्लोरिन आर CDI calls that we have already mentioned and levels भी हमने शेयर किए हैं। Talking about couple of other data points, for example, India VIX has cool off, so that is a relatively better thing. Nifty expiry है कल, आज important है कि Nifty 23,750 23,800 को होल्ड करे, that would be a very good sign for further momentum. So it's a very important level because last time वहाँ से मंदी शुरू हुई थी, so एक important supply zone के पास में वो कैसे उधर absorb करता है। Heavy weights में सिलेक्टिव मोमेंटम है, so आपको वही स्टॉक स्पेसिफिक प्ले आउट करना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग विद दैट एनबीएफसी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमने ऑलरेडी शेयर, बजाज फाइनेंस के बारे में बात किया कि काफी पोजिशनली अच्छा है और हमें 8 से 10% का मूव दिख सकता है यहाँ से भी। सॉरी, बजाज हाउसिंग हो गया था, बजाज फाइनेंस, या तो बजाज फाइनेंस काफी अच्छा है पोजिशनली वाइज, अच्छा मूव आया है फ्रॉम 7,500 to 8,500, बट जो भी कूल ऑफ अगर आता भी है तो डेफिनेटली इट वुड बी अगेन अ बाय फ्रॉम लोअर लेवल्स। क्लोजिंग विद दैट आई थिंक बैंक निफ्टी अभी जो ऑप्शन हम देख रहे थे 51,800, वो अभी भी एक रेंज में चल रहा है 320, नीचे में 310 का सपोर्ट है, ऊपर 350 का हर्डल है। There is no major momentum, so we can take another few more queries Avinash, and then accordingly we can decide post that. Great guys, we'll take 2 more queries. Then if we find a potential trade, then we'll definitely initiate the same. Mohan, is PTST considered a deliberate trade? Mohanji, definitely not. Piyush, sorry, Arpit sir, could you please explain a little about it? I guess Mohan sir is not very clear. So he's thinking PTST and delivery trades are same, but the time frame is different for both of the trades. Yes. So just to keep it in simple language, if you see the BTST is generally a short-term play that we try to do it. However, delivery trades are relatively positional, and that could vary from 1 day to few weeks to few months. So if you see the setup wise, definitely there's a difference. BTST is a quick momentum of today buying and tomorrow selling, और likewise STBT आज sell करके आप कल buy करें। However, delivery trade जो होता है आपका वो medium term to long term रहता है, that is very much different. So एक intra एक kind of overnight product हो गया और एक दूसरा हो गया positional product. Great. I hope Mohan sir, your query is cleared. So we'll take this last query for today, and guys, please make sure you post your queries on Stockholm. We'll take the last query of Aman Gupta. SBI put at the money. So could you please, Amanji, elaborate more about it? Yeah, SBI put at the money, like buy, sell. That is very much important. Amanji, this will be your last query. So if you are buy, so SBI put at the money call buy. So here, do you want to buy it or not? I mean, Arvind, could you have any
update on it? Like, Yeah. So if we see the setup wise, having said that, the query, keeping apart from that, if we see SBI range में है, नीचे में 750 का सपोर्ट है, ऊपर में 777 का हर्डल है, वीके सेटअप वाइज पॉजिटिव है, और कल रिजल्ट आने वाला है, तो डेफिनेटली सम मोमेंटम कैन बी सीन. ओवरऑल हमारा आउटलुक बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव है, सो वी वुड अवॉइड गोइंग फॉर पुट साइड. Having said that, it's a result specific play, so definitely there could be a swings on the either side, but setup wise जब तक 755 से लेकर 777 की रेंज में है, तब तक एक रेंज बाउंड बायस रहेगा, slightly positive. So from our side better to avoid. रिजल्ट प्योर प्ले कर रहा है, so definitely आप स्टॉप लॉस दिमाग में रखिए. ऊपर 777 का एक मेजर हर्डल जोन है और नीचे में 750 का सपोर्ट है. अकॉर्डिंगली यू कैन प्ले द पुट्स एंड कॉल फॉर द स्टॉक ऑप्शन. So great, guys. That's it from our end. And Arpit sir, if you want to add anything more before we Yeah. So just to summarize, couple of things starting with Nifty, important level is 23,800. 23,800 की closing के ऊपर fresh momentum we can see towards 24,000, 24,200. Immediate support है 23,600 का. बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में डेली स्केल पे हमने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखा है 50,000 के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और आज पूरे मार्केट की चॉपनेस के बाद अपने गेन्स को होल्ड किया है. तो 50,000 एक मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 51,000, 51,250 के अप मूव आ सकते हैं. To play this up move, we have recommended bull call spread for the February series. Apart from that, 2 CDI calls we have shared, Navin Florin and Kotak Bank. BTST एक City Union Bank का हमने दिया है. कल SBI का रिजल्ट है, and tomorrow we have Nifty expiry. So definitely we can see some fireworks tomorrow. So that's all from our side. Thank you guys. So Arpit sir, before I end the session, जैसे कि आपने कहा कि ब्रोकिंग सेक्टर स्टॉक्स में अच्छे खासी तेजी है, तो बीएससी में जैसे कि हमने देखा कि उसमें अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है, सो कैन वी डू or do we have any BTSC? So the thing is, it's a result. The date is due today, so we really don't know when the result will be out or it's already out. So better we are avoiding the counter that is on the result specific, because generally we see good momentum. Yeah, technically setup wise it is very strong across all time frame. So setup wise 5,600 का support है, ऊपर में 6,000 का hurdle है, bias positive है, but we will avoid giving any call on this counter because result है. I hope Amit ji this answer your query. So on that note, guys, we are done for the today's session, and please don't forget to join us tomorrow since we have our Nifty expiry tomorrow, right? And yes, जैसे कि अर्पित सर ने already कहा कि कल थोड़े volatility हो सकता है मार्केट में, considering कि कुछ stocks का results भी है and expiry भी है. So yes, let's hope कि हमारा कल का दिन profitable जाए. And yes, that's it guys from our end. Thank you so much, Arpit sir, for giving the insights and